नाउ एक्शन ऑफ मॉर्फिन ऑन जीआईटी। आपकी जीआईटी के ऊपर क्या एक्शन है मॉर्फिन का? मॉर्फिन आपको जीआईटी के इसमें क्या करेगा? तो एक्शन ऑफ मॉर्फिन ऑन जीआईटी। So what are the different actions of morphine on GIT, morphine and related compounds? So obviously it will decrease the peristalsis. It will decrease the peristalsis, and that's why it can cause constipation due to increase the vigorous spasm of smooth muscle in the GIT and anal sphincter. It decreases the peristalsis, causes the constipation because of the contraction of smooth muscle, and because of the vigorous spasm of smooth muscle of योर एनल स्फिंक्टर, जो एनल स्फिंक्टर जो है उसका विगरस स्पाजम करता है। स्पाजम मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको। इट इज आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द बाइलियरी कोलिक, मतलब बाइल का जो डक्ट है, बाइल डक्ट, उसका अगर स्पाजम हो गया तो उसमें भी यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एनालिसिक एक्शन। अंडरलाइंग कॉज इज एक्सर्बेटेड, दैट मीन्स अगर बाइलियरी कोलिक हो गया आपको तो आपका बाइल जो डक्ट है उसका स्पाजम हो गया, उसमें मॉर्फिन नहीं देना है, मॉर्फिन नहीं देना है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एनाल्जेसिक एक्शन इट विल रिलीव योर बाइलियरी कोलिक पेन, बट अंडरलाइंग कॉज विल बी अगेन एक्सर्बेटेड। एक्सर्बेटेड मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज इट इज अ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, सो इफ यू इंजेक्ट दिस मॉर्फिन इन द टेल्स ऑफ माइस, चूहा पकड़ने का आपने और क्या करने का, उसको मॉर्फिन का जो इंजेक्शन है उसके टेल में देने का। इन द माइस मॉर्फिन प्रोड्यूसेस सीवियर स्पाज्म ऑफ एनल स्फिंक्टर, severe spasm of anal sphincter and resulting into erection of tail। उसका पूंछ खड़ा हो जाएगा पूरा। अगर उसके टेल में अगर मॉर्फिन का इंजेक्शन देंगे तो उसका पूरा पूंछ खड़ा हो जाएगा। दैट इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रब्स टेस्ट और स्ट्रब्स टेस्ट। तो स्ट्रब टेस्ट क्या है? इंजेक्शन ऑफ मॉर्फिन इन द टेल ऑफ माइस दैट विल कॉज इरेक्शन ऑफ टेल ऑफ माइस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर। रिमेंबर, मॉर्फिन कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। आपको एक ये याद होगा, एक बाबा उसको बोलते हैं आसाराम बापू। सो आसाराम बापू जो है अभी जेल में है, वो उनके कारनामों के लिए। लेकिन ठीक है, जो सच है झूठे अपने को उसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन उनमें क्या था कि मॉर्फिन का वो एडिक्शन थे। सो दैट आसाराम बापू वाज एडिक्टेड टू मॉर्फिन, एंड दैट्स व्हाई if you see the photos of if anybody has seen the Asram Babu, see he was always having pinpoint pain, he was always having constipation because of this morphine addiction. Then what is the action of morphine on other smooth muscles? So increasing the tone of uterus and detrusor muscle of bladder, constriction of sphincter, and it will cause urine retention। so, sphincter को constrict करेगा, जो detrusor muscle जो है उसको ये करता है, उसको डायलेट करेगा। constriction of sphincter and will cause the urinary retention। cardiovascular system पे क्या इफेक्ट है? So due to okay, so this morphine will cause peripheral vasodilation, peripheral blood vessel को dilate कर देगा, and that's why it will reduce the preload on the heart, and it will decrease the blood pressure। Also by because of the stimulation of vagus nerve, it will cause bradycardia, decrease in the heart। Now what is the effect of morphine on neuroendocrine system? जो endocrine system है आपका, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके ऊपर क्या एक्शन होगा ये मॉर्फिन? So it inhibit the release of morphine, inhibit the release of this growth hormone releasing hormone and thyroid releasing hormone, corticotropic releasing hormone CRH, decrease in the plasma concentration of follicular stimulating hormone, luteinizing hormone and adrenocorticotropic, but it increases the लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको डिप्रेस करता है, पोस्टीरियर को नहीं। इम्यूनो सिस्टम के ऊपर क्या एक्शन होगा? सो इट विल सप्रेस योर इम्यूनिटी एंड यू विल बी प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। आपकी इम्यूनिटी कम कर देगा मॉर्फिन, और आपको इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। सो इट विल सप्रेस द इम्यूनिटी एंड इंक्रीजेज द ससेप्टेबिलिटी फॉर इन्फेक्शन। एंड मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, कहाँ पे होता है? सो मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है मॉर्फिन का? It will decrease the metabolic rate. It will decrease the metabolic rate and result into slight fall in the body temperature. It will causes hypothermia, a decrease in the body temperature known as hypothermia. Now absorption, distribution, metabolism and elimination of morphine. So when morphine is given orally, it is adequately absorbed and extensively metabolized during the first pass metabolism. So only 20 to 40% bioavailable. इतना डोज देंगे उसमें से सिर्फ 20 या 40% ही आपका
प्लाज्मा में जाएगा, बाकी का सब मेटाबोलाइज हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. Now this morphine can cross placental barrier. It is also secreted in the milk. That's why it can adversely affect the fetus. If any pregnant woman use this morphine, it can depress the respiration of your fetus. If you any lactating mother is using morphine, so it can also depress the fetus because it is also secreted in the milk. ये दूध में भी मिल जाएगा. प्रेग्नेंट वुमन ने ले लिया तो उसके पेट में जो बच्चा है उसका रेस्पिरेशन सप्रेस कर देगा. अगर कोई लैक्टेटिंग वुमन है तो उसके मिल्क में भी ये मॉर्फिन सिक्रेट होता है. नाउ रिमेंबर मॉर्फिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय conjugation. Wait a second. Morphine is metabolized in the liver by conjugation with the glucouronic acid to form active metabolite. और active metabolite कौन है इसका? Morphine 6 glucouronide. Morphine 6 glucouronide. ठीक है, अंडरलाइन किया. Morphine 6 glucouronide. Morphine 6 glucouronide is the active metabolite of morphine, which is more potent than morphine. There are two metabolites of morphine, morphine 6 glucouronide and morphine 3 glucouronide. These metabolites are excreted in the urine. So it is just a metabolism. Pharmacological uses and adverse effect of this morphine. Use क्या है इसका देख लेते हैं. चलो, adverse reaction of morphine. Adverse reaction क्या क्या है? So that is because of the pharmacological responses. Okay? Intolerance. Your body will not tolerate this morphine. Body will not accept this morphine. It may produce occasionally tremors, delirium. Tremors means unwanted contraction of muscle, smooth muscle particularly. Delirium, allergic skin rash, pruritus, then dermatitis. Morphine is a histamine releaser. ये क्या करेगा? हिस्टामाइन को रिलीज कर देगा बॉडी में. तो क्या होगा? आपको प्रोराइटिस होगा, डर्मेटाइटिस होगा, एलर्जी हो जाएगा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी आ जाएंगे. So anaphylactic reactions, decrease in the blood pressure has been reported. Now what is the adverse reaction of this morphine on CNS? So it will cause euphoria, dysphoria, mental clouding. आपको इतने थॉट्स आएंगे साइमल्टेनियसली कि आपको प्रोसेस नहीं कर पाएगा ब्रेन. So more thoughts will be come in your mind. So mental clouding, vertigo, चक्कर आना चालू हो जाएगा, nausea, vomiting, headache, fatigue. Paresthesia means numbness in the legs. आपको आपके जो पैर है, आपको थोड़ा सा पैर जो है वो आपकी जो लिम्स है, आपकी जो लेग्स है उसमें numbness आ जाएगा. That is known as a paresthesia. Respiratory depression. Respiratory depression है because of it will depress the respiratory center. It depresses the respiratory center. It will cause constipation due to contraction of your sphincters of your GIT. So it can cause intestinal obstruction in the geriatric patient. And abdominal distension is there, increase the pressure in the biliary tract. Then it will also cause urine retention. Okay. Then hypotension, because of hypotension, decrease in the blood pressure because of the peripheral vasodilation and histamine release, that is due to which it causes the hypotension. We'll see again the next. Tolerance is developed. Repeated administration of morphine. अगर बार बार आप morphine का सेवन कर रहे हो, repeated administration of morphine results in tolerance. Okay, person can tolerate the morphine. Person with the tolerance to morphine will have cross tolerance to other opioid analgesics. मतलब अगर morphine का लत लग गई आपको, तो मान लीजिए tolerance मतलब क्या होता है? I have already explained you regarding the tolerance, types of tolerance in the very beginning when we were discussing about the general pharmacology. So what is meant by racial tolerance, what is meant by species tolerance, what is meant by cross tolerance. I have already explained all these things. So if you're not then you can go and watch last year's lecture in the YouTube. So it will produce, अगर आपको morphine का tolerance हो गया, इसका मतलब आपको कोडिन का भी tolerance है, इसका मतलब आपको पापावेरिन का भी tolerance है, इसका मतलब आपको मेथाडोन का भी टॉलरेंस है. दैट इज अ क्रॉस टॉलरेंस. देन ड्रग डिपेंडेंस. मेजर ड्रॉबैक ऑफ मॉर्फिन इज ड्यू टू इट्स इफोरिएंट एक्शन. जो इफोरिया करता है, इफोरिया, फॉल्स फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग, दैट इज द मेजर ड्रॉबैक. दैट मेक्स इट द वर्स्ट ड्रग ऑफ एबल्स. Morphine produces the sensations like turning in the stomach, feeling of warm in the epigastrium, flushing sensation in the lower abdomen. Okay, and these actions morphine addicts as akin to sexual organism. They are also known as morphine addicts. जो है ये सब एक्शन जो है, जैसे
turning in the stomach, feeling of warm in the stomach, flushing sensation in the lower abdomen. तो मॉर्फिन जो जो रेगुलर यूज करते हैं एडिक्ट जो होते हैं वो उसको बोलते हैं थ्रिल बोलते हैं या फिर किक बोलते हैं. These actions are described as a kick or thrill by morphine addicts. That is nothing but the turning sensation in the stomach, warm sensation in the epigastrium, flushing sensation in the lower abdomen, loss of libido. जैसे मॉर्फिन क्या करेगा आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर देगा. That's why morphine addict will have loss of libido. Okay, therefore, morphine should be prescribed only in case of terminal cancer pain, not readily to other chronic pain. तो मॉर्फिन का यूज कब करते हैं डॉक्टर लोग? सिर्फ जब कैंसर के पेशेंट होते हैं, टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, तो उस टाइम पे बाकी पेन किलर आपका यूजफुल नहीं है. So they are not able to relieve your pain in case of terminal stage of cancer. So only at that time a physician used to prescribe this morphine. And दूसरा एक ही यूज होता है उसका जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो एम्बोस एम्बोस बोलते हैं उसको. तो मिलिट्री एम्बोस में अगर किसी को इंजरी वगैरह होता है तो उसको भी मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं. आपने एक मूवी देखा होगा टैंगो चार्ली, उसमें है ये सब. एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, मॉर्फिन का पॉइजनिंग अगर हो गया आपको तो क्या करना है? It occurs due to clinical overdose. So why morphine poisoning occurs due to clinical overdose, or it may occur due to accidental ingestion of large dose of morphine by addict or by suicidal intent. अगर किसी ने जबरदस्ती आपको खिलाया या गलती से खिला दिया, homicide action. A 60 milligram dose is usually toxic, not fatal. 60 milligram डोज अगर आपने मॉर्फिन का ले लिया तो आपको टॉक्सिटी हो जाएगा, लेकिन आप मर नहीं जाओगे, जिंदा रहोगे. But if you take a 250 milligram dose, that is a fatal. अगर 250 milligram मॉर्फिन अगर ले लिया आपने तो आप मर जाओगे. That is a fatal. Morphine poisoning is characterized by first respiratory depression. Respiratory depression. Pinpoint pupil. Cyanosis मतलब decrease in the respiration. Reduced body temperature. Hypothermia. Urinary retention. Hypertension, shock, coma. Convulsion can occur in the infant. Death is usually because of the respiratory depression. तो यहाँ पे याद रखो ये morphine can induce the seizures, can induce the epilepsy, can induce the fits. So यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स होते हैं जैसे respiratory depression, pinpoint pupil, hypothermia, urinary retention, constipation. ये अगर symptoms है तो उसका मतलब है कि morphine poisoning हो गया. What is the specific antidote? तो naloxone or nalorphine. These are known as a specific opioid antagonist. They are used as a specific antidote for morphine poisoning. Naloxone and nalorphine, they are a specific antidote. They produces the dramatic reversal of respiratory depression produced by morphine. So whatever respiratory depression is produced by morphine, they used to reverse it. Okay. So याद रखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So morphine poisoning specific antidote कौन सा है क्या है? तो याद रखो naloxone, nalorphine, they are the specific antidote for morphine poisoning. Morphine antagonists should be used cautiously because they are also opioid drug. तो ये थोड़ा सा cautiously यूज करना है. Withdrawal symptoms दिखा सकता है patient. This is the morphine poisoning which is very important. और therapeutic uses of pure morphine. उसका use क्या है? Use क्या है? To relieve the pain. It is an analgesic. It is used as a analgesic to relieve the pain. Morphine is a most potent analgesic. So it is also sometimes used with the acute myocardial infarction, then fracture of bones, myocardial infarction, fracture of bones, burns, terminal stage of cancer patient, pulmonary embolism, then acute pericarditis, spontaneous pneumothorax. It can be used in the biliary and renal colic with combination with the atropine to reduce the. It is also used to reduce the post-operative pain. It is also used in the acute left ventricular failure, pulmonary edema and severe pain. It will act as a sedative in case of severe pain. Then precaution to the morphine therapy. क्या precaution लेना है morphine का use करते समय? Okay? So morphine should not be used, or if you want to use cautiously. So in case of chronic obstructive pulmonary disease, so you have to use morphine cautiously in patient with the COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Morphine should be cautiously used in the COPD because morphine is a respiratory depressant. And again, morphine should be used cautiously in the patient with the myxedema and old patient and infants.
and morphine should be avoided, or it should be contraindicated, absolutely contraindicated. Morphine is absolutely contraindicated in patient with the head injuries. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है because it will produce respiratory depression and patient will die. It also increases the CSF pressure in the spinal cord. So morphine is contraindicated in case of head injury. मैं use नहीं करना है. Morphine with the severe impairment of liver and kidney function. So morphine should be used cautiously with the patient with the liver impairment and kidney impairment. Kidney का problem है, किसी को liver का problem है, उसमें भी morphine का use cautiously करना है. Morphine is absolutely contraindicated in case of head injury. Head injury में morphine use नहीं करना है, ठीक है, याद रखो. Now other phenanthrene series drug, other drug कौन से है उसमें आता है आपका codeine. आप याद रखो codeine is a methoxymorphine. Codeine is a methoxymorphine. It is a less potent analgesic than morphine and does not produce significant respiratory depression. And it also has a low dependence liability. Dependence नहीं करेगा. 10% of total codeine administered converted into body. So morphine is, इसमें देखो morphine ये जो codeine है it is converted into body into morphine. So codeine का metabolism होके body में बढ़ता है morphine. Codeine is converted into morphine in the body metabolism. So you can say morphine is the active metabolite of codeine, or codeine is a product of morphine. Okay? Suppose that you take a 10 milligram of codeine. तो आपने 10 milligram codeine ले लिया तो उसमें का 1 milligram morphine बनेगा आपके बॉडी में. So 10% of the total codeine is converted into morphine. उसका एक डेरिवेटिव है dihydroxycodeine and oxycodone. They are also similar to codeine. Codeine is mostly used as an antitussive. It is also mostly used as antitussive, but it is also used as an analgesic, antidiarrheal agent. Main adverse effect is a constipation. That's all about the codeine. But tramadol is a total synthetic derivative of morphine. Synthetic opioid derivative acts on a selectively on a mu receptor. It is selective mu receptor agonist. It is metabolized in the liver to active metabolite known as a orthodesmethyl tramadol. It has an action similar to codeine and has a low addiction potential than morphine. It is mostly used for post-operative pain. The side effects of this tramadol includes nausea, dizziness, vomiting. Tramadol का एक टैबलेट आता है ट्रामासिप बोल के, ट्रामासिप और अल्ट्रासेट बोल के भी एक टैबलेट आता है. ये कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ट्रामाडोल प्लस पैरासिटामोल. इसका कॉम्बिनेशन आता है मोस्टली यूज्ड इन द ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस. ट्रामाडोल प्लस पैरासिटामोल, ट्रामासिप, अल्ट्रासेट, ये ब्रांड है उसका. Now next category is known as benzyl isoquinosyl alkaloids. So codeine, morphine, theanine, tramadol, that was a phenanthrene type of alkaloids. This is synthetic. So codeine आता है naturally, morphine आता है, ये synthetic है tramadol. पापा वेरिएंट, so it is devoid of any analgesic activity. ये आपका analgesic नहीं है, ये आपका पेन कम नहीं करेगा. Okay? So it has a smooth muscle relaxant property. It is smooth muscle relaxant. So that's why this papaverine is used in the various intestinal and coronary spasms. So it is commonly used as a coronary dilator, peripheral vascular disease. It is used as a coronary vasodilator in the peripheral vascular disease. Also used as an antispasmodic. Also used as an antispasmodic. Intrapersonal injection of papaverine causes penile erection. तो आपका जो मेल गोनेडल ऑर्गन होता है, पर्पस कन्वर्जन जो है आपका, उसमें अगर पापावेरिन का इंजेक्शन देंगे तो इरेक्शन हो जाएगा. सो इट इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड टू ट्रीट इम्पोर्टेंस. ठीक है, अगर बच्चा नहीं पैदा कर सकते उसमें यूज करते हैं. द प्रोसेस हैज अ कॉम्प्लिकेशन. Nowadays not used for this purpose because lot of drugs are available. Next is a Narcotic. It is also having significant antitussive action in the therapeutics low dose without disadvantage of morphine. ठीक है, तो ये भी एंटीटसिव नास्कोपिन और मॉर्फिन जैसा एडवर्स इफेक्ट नहीं है उसको. पोटेंट रिलीजर ऑफ हिस्टामाइन इन लार्ज डोसेज इट कैन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म एंड hypotension. Next one is heroine. It is semi-synthetic derivative of morphine, diacetyl morphine. Diacetyl morphine is known as a heroine. याद रखो, diacetyl morphine known as a heroine. Diacetyl morphine is known as a heroine. Very potent analgesic than morphine. Possesses greater euphoria and that's why it is again liable for addiction. तो ब्राउन शुगर बोलते हैं, हीरोइन को क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर. Consequently, higher liability for dependency. The drawback and it is extensively used as a brown sugar.
इसको ब्राउन शुगर बोलते हैं. डायएसिटिल मॉर्फिन इज अ हीरोइन. Acetyl derivative of morphine is heroin. Use नहीं करते. Next one is apomorphine. Apomorphine. So it is obtained by acid catalyzed rearrangement of morphine. It is a stimulant to CTZ. It is a potent emetic drug. बाकी एक्शन मॉर्फिन की जैसी है, लेकिन इट इज अ CTZ stimulant. मॉर्फिन क्या है? CTZ. It is used in the emesis. तो अगर ये apomorphine अगर किसी ने लिया तो उसको emetic चालू हो जाए. Emetic drug. Now we'll see the next remaining point. After that we'll end this topic. Synthetic morphine substitute or derivative. Synthetic derivative कौन से? The synthetic derivative of morphine, they are classified into 3 classes, 4 classes. We'll see one by one. So pethidine and its derivative. Pethidine and its congener, methadone and its derivative or congener. Pethidine and its congener, methadone and its congener. Then morphine compounds. Then benzomorphin derivative. Miscellaneous में आएगा आपका ये ethylene and congener, methadone and congener, morphine compounds and benzomorphin derivative like pentazocine. Miscellaneous like nalbuphine and buprenorphine. We'll see the first pethidine. Pethidine is also known as a meperidine. So pethidine is also known as a meperidine. It has analgesic, euphoric and respiratory depressant action like morphine. Will also causes CNS CTG stimulation and nausea and vomiting than morphine. It is a less spasmogenic than morphine. And जितना spasm करेगा स्मूथ मसल का उतना कम करेगा. Retention, constipation ये कम करेगा compared to morphine. Spasmogenic, less urine retention, less constipation than morphine. It causes the hypertension, syncope, tachycardia, dryness of mouth due to vagolytic activity. Absorption, distribution, metabolism and anemia. क्या है इसमें? Absorb from GIT. 50% is absorbed. 50% bioavailability. Can cross placental barrier and also created in the milk. Metabolized to norpethidine. So pethidine is metabolized to norpethidine. Or meperidine is metabolized to norpethidine.